नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। शुभ संध्या एवरीवन। गुड इवनिंग। स्वागत करते हैं सायंकालीन सत्र में। भगवान बुद्ध की अर्पणा एवं प्रारंभिक वंदना से सत्र को शुरू करते हैं। वे जो हैं अरहंत भगवान सम्यक संबुद्ध, भगवान के द्वारा अच्छी तरह समझाया गया धम्म, धम्म के मार्ग को अच्छी तरह प्रतिपादित करने वाले भगवान के श्रावक संघ, उन भगवान बुद्ध धम्म और संघ की हम यथोचित सत्कार से पूजा करते हैं। हमारा सौभाग्य कि भगवान को महान निर्वाण की प्राप्ति के बाद भी आगे आने वाली पीढ़ी पर अनुकंपा थी। आदर पूर्वक दी गई यह तुच्छ भेंट कृपया स्वीकार करें। हमारे दीर्घकालिक हित और सुख के लिए। अरहंत भगवान सम्यक संबुद्ध, उन भगवान बुद्ध का मैं अभिवादन करता हूँ। भगवान के द्वारा अच्छी तरह समझाया गया धम्म, उस धम्म को मैं नमन करता हूँ। भगवान के श्रावक संघ, जिन्होंने मार्ग को अच्छी तरह प्रतिपादित किया, उस संघ को मैं नमन करता हूँ। आइए हम भगवान बुद्ध की प्रारंभिक वंदना करें। नमस्कार उन्हें जो है अरहंत भगवान सम्यक संबुद्ध, नमस्कार उन्हें जो है अरहंत भगवान सम्यक संबुद्ध, नमस्कार उन्हें जो है अरहंत भगवान सम्यक संबुद्ध। आए हम भगवान बुद्ध का अनुस्मरण करें। भगवान बुद्ध की अच्छी कीर्ति इस प्रकार फैली है। ऐसे हैं भगवान अरहंत सम्यक संबुद्ध, ज्ञान और आचरण से संपन्न, सुगत एवं लोक ज्ञाता, भटके हुए मनुष्यों को संयमित करने वाले अनुपम सारथी, देवों और मनुष्यों के शास्ता भगवान बुद्ध। आए हम भगवान बुद्ध के गुणों का पाठ करें।
भगवान बुद्ध जो श्रेष्ठ अरहंत हैं, उत्तम गुणों से युक्त हैं, शुद्धता, अति उत्तम प्रज्ञा एवं करुणा के पुंज है, जो समझदार मनुष्यों की बोधि जगाते हैं। जैसे सूर्य कमल को खिला देता है, उन अहिंसक जिनका मैं सिर झुकाकर वंदन करता हूँ। भगवान बुद्ध जो सभी प्राणियों की उत्तम सुरक्षित शरण है, मैं पहली अनुस्मृति के रूप में उनका सिर झुकाकर वंदन करता हूँ। मैं भगवान बुद्ध का दास हूँ और बुद्ध मेरे शास्ता है। मैं भगवान बुद्ध को यह शरीर और जीवन समर्पित करता हूँ। मैं श्रद्धा पूर्वक भगवान द्वारा बताए गए बोधि के मार्ग पर चलूंगा। मेरी कोई और शरण नहीं है। भगवान बुद्ध ही मेरी श्रेष्ठ शरण है। इस सत्य वचन के प्रभाव से शास्त्रा की शिक्षा में मेरी प्रगति हो। भगवान बुद्ध की वंदना करने से जो पुण्य मैंने यहाँ अर्जित किए हैं, उनके प्रभाव से मेरी सारी बाधाएं दूर हों। मन वचन और कर्म से जो भी मैंने भगवान बुद्ध के प्रति दुष्कृत्य किए, भगवान उनके लिए मुझे क्षमा प्रदान करे, जिससे मैं भविष्य में संयमित रहूं। आए हम धम्म का अनुस्मरण करें। जो धम्म भगवान ने अच्छी तरह समझाया, यही स्पष्ट दिखता है, कालातीत है, अन्वेषणा को प्रोत्साहित करता है, अंतर्मुखी करता है, प्रत्येक प्रज्ञावान को व्यक्तिगत रूप से अनुभव होता है। आए हम धर्म के महान गुणों का पाठ करें। फली प्रकार से समझाया गया ये धम्म सर्वश्रेष्ठ है, जिसके मार्ग और फल, परियति और मोक्ष दो आयाम है। जो धम्म को धारण करते हैं, उन्हें नीचे लोकों में गिरने से बचाता है। अंधकार हटाने वाले इस श्रेष्ठ धम्म की मैं वंदना करता हूँ। धम्म जो सभी प्राणियों की उत्तम सुरक्षित शरण है, दूसरी अनुस्मृति के रूप में सिर झुकाकर मैं उसका वंदन करता हूँ। मैं धम्म का दास हूँ। धम्म मेरा श्रेष्ठ स्वामी है। धम्म को मैं अपना शरीर और जीवन समर्पित करता हूँ और धम्म की वंदना करते हुए मैं धम्म के श्रेष्ठ मार्ग पर चलूंगा। मेरी कोई और शरण नहीं है। धम्म ही मेरी सर्वश्रेष्ठ शरण है। इस सत्य वचन के प्रभाव से शास्त्रा की शिक्षा में मेरी प्रगति हो। धम्म की वंदना करने से जो पुण्य मैंने यहाँ अर्जित किए हैं, उनके प्रभाव से मेरी सारी बाधाएं दूर हो। मन वचन और कर्म से जो भी मैंने धम्म के प्रति दुष्कृत्य किए, धम्म उनके लिए मुझे क्षमा प्रदान करे, जिससे मैं भविष्य में संयमित रहूं। संघानुसति संघाभिगीति। आए हम संघ का अनुस्मरण करें। धर्म के मार्ग को अच्छी तरह प्रतिपादित करने वाले भगवान के श्रावक संघ, धर्म के मार्ग को सीधे प्रतिपादित करने वाले भगवान के श्रावक संघ, धर्म के मार्ग को ज्ञान पूर्वक प्रतिपादित करने वाले भगवान के श्रावक संघ, धर्म के मार्ग को निष्ठा पूर्वक प्रतिपादित करने वाले भगवान के श्रावक संघ,
जो हैं चार युगल और आठ प्रकार के आर्य, ये हैं भगवान के श्रावक संघ। वे हैं भेंट देने योग्य, आतिथ्य के योग्य, दक्षिणा देने के योग्य और नमस्कार के योग्य, इस लोक में अतुलनीय पुण्य क्षेत्र। आए हम संघ के महान गुणों का पाठ करें। सद्धर्म से उत्पन्न सद्गुणों से युक्त संघ इस मार्ग को अच्छी तरह प्रतिपादित करता है, जो आठ आर्यों का श्रेष्ठ संघ है, जिनकी काया और चित्त शील आदि धर्म से युक्त हैं। उस शुद्ध आर्य संघ का मैं वंदन करता हूँ, जो संघ सभी प्राणियों की उत्तम सुरक्षित शरण है। तीसरी अनुस्मृति के रूप में मैं उस संघ को सिर झुकाकर वंदन करता हूँ। मैं संघ का दास हूँ और संघ मेरे श्रेष्ठ स्वामी हैं। मैं संघ को अपना शरीर और जीवन समर्पित करता हूँ और संघ की वंदना करते हुए उनके द्वारा भली भांति प्रतिपादित मार्ग पर चलूंगा। मेरी कोई और शरण नहीं है, संग ही मेरी श्रेष्ठ शरण है। मेरे इस सत्य वचन के प्रभाव से मैं शास्त्रा की शिक्षा में आगे बढ़ूं। संघ की वंदना करने से जो पुण्य मैंने यहाँ अर्जित किए हैं, उनके प्रभाव से मेरी सारी बाधाएं दूर हो। मन वचन और कर्म से जो भी मैंने संघ के प्रति दुष्कृत्य किए, संघ उनके लिए मुझे क्षमा प्रदान करे, जिससे मैं भविष्य में संयमित रहूं। श्रीलंका का एक पारंपरिक पाठ। प्रमाद मूल को लोभो, लोभो विवाद मूल को, दस्या करो लोभा, लोभो परम ही पेत को, तं लोभं परिजानतं वंदे हम वीत लोभकम्। प्रमाद का मूल लोभ, विवाद का मूल लोभ, दास बनाए लोभ, प्रेत लोक में ले जाए लोभ। जो लोभ को पूर्णतया जानता, उस वीत लोभ का मैं वंदन करता। विहंय मूल को दोषो, दोषो विरूपकार को, विनाशकार को दोषो, दोषो परम ही नेरियो, तं दोषं परिजानितं वंदे हम वीत दोषकं। परेशानी का मूल द्वेष, कुरूपता का कारण द्वेष, विनाश का कारण द्वेष, निरय लोक में ले जाता द्वेष। जो द्वेष को पूर्णतया जानता, उस वीत द्वेष का मैं वंदन करता। सब मूल को मोहो, मोहो सब भीतिकार को, सब अंधकार को मोहो, मोहो परम ही स्वादि को, तं मोहं परिजानतं वंदे हम वीतमोहकम्। सभी कष्टों का मूल मोह, सभी विपत्तियों का कारण मोह, मन के अंधकारों का कारण मोह, पशु लोक में ले जाता मोह। जो मोह को पूर्णतया जानता, उस वीत मोह का मैं वंदन करता। Okay, then I will hand over this session to Geeta ji for further instructions. धन्यवाद निखिल जी। सभी को नमस्ते। तो ये इनसाइट शेयरिंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए किसी को चैंटिंग से ब्रेक थ्रू मिलती है, तो किसी को कोई किताब पढ़ने से या कोई रिट्रीट या Q&A सेशन से। ऐसे ही आज हमारे साथ अपूर्व जी है, तो वो बताएंगे कि उन्हें कैसा ब्रेक थ्रू मिला है
तो जस्ट अ शॉर्ट ब्रीफ अबाउट अपूर्व। वो दिल्ली के निवासी है एंड ही इज सेल्फ एम्प्लॉयड, वर्क्स विद स्कूल्स इन आईटी स्पेस। सर के बहुत ही पुराने स्टूडेंट और कनेक्टेड टू सर क्लोजली मोर देन 3 decades नाउ। तो धम्मारामा में फ्रॉम इट्स इंसेप्शन टाइम से वो जुड़े हैं धम्मारामा में। उन्होंने भी काफी सेवा दी है। पैनल डिस्कशन में कोविड के टाइम पे उन्होंने सम्मा सती के बारे में चर्चा की थी। और पाली सेशन जो 2019 में जो धम्मारामा में हुआ था, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी की थी। एंड आई पर्सनली माय ऑब्जर्वेशन इज आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद Apoorv, with few of the Dhamma friends like Deepti and Payal and others. 2019 में जब सर की जो टीचिंग्स ऑफ बुद्धा का जो वीडियोस थे, 17 वीडियोस, so I also had an opportunity. So Apur was one amongst them. So we used to discuss it in the evening every Friday. I'm not sure if Apur remembers. I definitely remember, and we used to share all those details and everything. अदर देन धम्मा एस्पेक्ट अपूर्व के और भी रुचि है, जैसे न्यूज सुनना और पजल सॉल्विंग एंड ऑल दैट। तो वो ही बताएंगे आज कि उनकी कैसी धम्मा जर्नी और क्या समझ है। ओवर टू यू अपूर्व। Am I audible? Okay. And yes, I very much remember those sessions. Thank you so much, Vikas ji, for joining. You will be my pillar of strength. Namaste. Thank you. मेरा Namaste. नाम Namaste. मेरा नाम अपूर्व है, and today I'll be sharing some of my experiences on my Dhamma journey. I would like to begin by thanking Geeta ji for inviting me and to Sir for suggesting this very enriching exercise. To be honest, शुरू में तो मैं सोच रहा था कि मैं प्रेजेंट ना ही करूं, मेरे पास कुछ खास कहने को है नहीं. But then I decided that I should speak. Maybe it'll help me. And maybe, just maybe, it can help someone else too. And so, here I begin. वैसे तो मुझे मेरी लाइफ चॉइसेस पर मोस्टली रिग्रेट ही रहता है, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी अबाउट वन लाइफ चॉइस ऑफ माइंड, एंड दैट इज कि मैंने धम्मा का साथ कभी नहीं छोड़ा. थ्रू ऑल माई ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस, आई क्लंग ऑन टू धम्मा. कभी छूटा भी तो मैं वापस आ गया. गिरते पड़ते कैसे भी मैं धम्मा के साथ जुड़ा रहा. बट माई इंट्रोडक्शन टू धम्मा sorry but my introduction to Dhamma started as a very fortunate accident. तब मैं कॉलेज में था. हमें कॉलेज में ह्यूमैनिटीज के 4 कोर्सेज करने होते थे. मैं तब लास्ट सेमेस्टर में था और मेरा ह्यूमैनिटीज का एक कोर्स बचा था, और मेरे सामने 2 ऑप्शंस थे. एक प्रोफेसर धर का कोर्स, साइंस एंड ह्यूमैनिज्म, लेकिन उस समय मुझे प्रोफेसर धर के बारे में कुछ नहीं पता था, ना ही मुझे बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में कुछ खास आइडिया था. दूसरा कोर्स मुझे याद नहीं, लेकिन उस समय मेरे सर पर सिविल सर्विसेज का भूत सवार था, और मुझे लगता था कि दूसरे कोर्स से मुझे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में फायदा होगा. पहला लेक्चर शुरू हो गया था, पर मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि मैं कौन सा कोर्स लूं. आधे घंटे तक मैं एक फ्रेंड के साथ डिस्कस करता रहा. एंड देन समथिंग हैपेंड एंड आई डिसाइडेड टू ट्राई आउट सर्स कोर्स. दैट वन मोमेंट changed the course of my life. In fact, that friend also happens to be today online. So 10 दिन पहले जब गीता जी का मुझे मैसेज आया, तो I asked myself, what is that one aspect of Buddha's teaching which appeals to me the most? And the answer was Ajahn Amaro's personal Dhamma journey. हालांकि मैं उनकी पर्सनल स्टोरी अच्छे से जानता हूं और किसी को अच्छे से समझा भी सकता हूं, पर मैंने रियलाइज किया कि मैं असल में उनकी टीचिंग्स को फॉलो नहीं कर रहा था. So I asked Geeta ji for 10 days time, and I decided that in these 10 days, I will revise his teachings and actually live them for 10 days. So that today I can speak from some experience. आप में से शायद कुछ लोग जानते हो कि अजान अमारो used to suffer from anxieties even after becoming a monk. और ये एंजाइटी कोई नॉर्मल एंजाइटी नहीं थी. It was, and I quote from his book, like the force of gravity. It was there all the time. This anxiety was so strong, pervasive, and unrelenting that I hadn't even realized I was anxious. End quote. In fact, his anxiety was so continuous and normal for him that it took him 6 or 7 years as a monk to even realize that he was anxious.
Over the course of the next 3 years, he worked full time on his anxiety under the guidance of Ajahn Sumedho and was finally able to get freedom from it. This story carries a very special meaning for me, as I too suffer from chronic anxiety and depression. By chronic, I mean that moments of rest and relaxation for me are few and far between. A typical day for me consists of being worried about one thing and then about another, then another, and so on. The first thing that Ajahn Amaro did was to focus on the physical sensations every time anxiety arose. तो एक गलती तो मैं ये कर रहा था कि इतने सारे बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट्स में कंफ्यूज होकर मैं शरीर की संवेदनाओं पर समहाउ ध्यान नहीं दे रहा था. जब भी एंजाइटी जागती थी तो मैं उससे जूझने लगता था. But at the beginning of these 10 days, I made a resolve to focus on the physical sensations each time I became aware of my anxieties. As I started to focus on these physical sensations, two things that Ajahn told me began to strike me. इनका जिक्र उन्होंने अपनी किताब ब्रेक थ्रू में भी कर रखा है. जब 2019 में अजान अमारो इंडिया आए थे तो Q&A सेशन में मैंने एंजाइटी को लेकर एक सवाल पूछा था और उसके जवाब में अजान ने दो मेन बातें बोली थी. एक तो ये कि डिप्रेशन एंड एंजाइटी बहुत भारी इमोशंस होते हैं, इतने भारी कि ये हमारी पूरी लाइफ बर्बाद कर सकते हैं. बट व्हेन यू लुक एट द करस्पॉन्डिंग फिजिकल सेंसेशन, दे आर मच लाइटर. दे आर नॉट लाइफ थ्रेटनिंग एट ऑल. आई कोट फ्रॉम हिज बुक. After spending so much time, effort, and energy trying to get away from fear, when I brought attention to what it is really like, to the feeling of fear as a sensation, there was the somewhat disappointing realization that fear isn't really all that bad. I asked myself, why do I spend so much time, effort, and energy trying to get away from this? It's not as bad as a toothache, let alone a broken bone or anything like that. It's really not that terrible, not that unbearable at all. I'm not pretending that it is delightful or sweet, but it is not really that bad. It is only because of the conditioning and reactive process that we have the sensation of panic and dread, which causes us to want to escape fear. End quote. For example, every time I have anxiety, I have this very unpleasant feeling in my scalp and face area. I experience tension and heat there. But if I ask myself, would you be okay if this sensation continues for the rest of your life? The answer is always yes. This is nothing compared to the sense of panic that I feel all the time. In fact, Ajahn had used a very interesting phrase in his answer to me. He said that he almost felt cheated when he looked at how light the sensations were. And because the sensations are not life-threatening, you can work with them. You can try to understand their nature. And that opens up a lot of possibilities. Let me explain. अभी तक मैं इमोशन के लेवल पर अनित्यता समझने की कोशिश कर रहा था, but that was not working out for me. अगर कोई आदमी डीप डिप्रेशन से गुजर रहा हो और आप उससे ये कहो कि ये अनित्य है, he'll say big deal यार. वैसे मैं अपनी सेंसेशंस को ज्यादा देर तो नहीं देख पाता हूं, पर जब मैं कुछ देर बाद देखता हूं तो मैं पाता हूं कि वो बदल चुकी होती है. कभी इट इज इन द राइट साइड ऑफ द स्कैल्प, कभी लेफ्ट, कभी इंटेंसिटी तेज होती है तो कभी धीमे. So while anxiety remains more or less constant, the underlying sensation keeps changing. तो मुझे लगा कि मेरे सामने अनित्यता का 24x7 डेमो चल रहा था और मैं उसे देख ही नहीं रहा था. Another experiment that Ajahn suggested was this. As before, जब भी कोई strong emotion जागे, take your attention to the physical sensation. उसे बड़े ध्यान से देखो, पूरा absorb हो जाओ, without any commentaries or judgment. And with, Ajahn uses this very nice term, radical acceptance. Do that for a few minutes and then consciously let go. Let the body and mind relax and come back to some form of clarity. And then do this little experiment. I would encourage all of you to do it because it has some very interesting results. I quote from his book. Let's use the example of anxiety again. You bring your attention to that feeling in the body, you let the body relax, and then you ask yourself what you were worried about.
almost invariably the mind will take a couple of moments to find the answer. For those few moments, it will be at a loss. And during that short time, you have unplugged the anxiety program. There was no thing to be worried about. It truly dawns on you that if you don't make it a problem, it is not a problem. End quote. I try to do this experiment often, and it always amuses me कि जिस चीज को लेकर मैं इतना परेशान था कि मैं सो नहीं पा रहा हूं, ठीक से जी नहीं पा रहा हूं, फॉर अ गुड 2 seconds मुझे उसका नाम भी नहीं याद था. इनफैक्ट आई वॉज परफेक्टली ओके विद जस्ट द वे थिंग्स आर. Another aspect of my meditation that I struggled with a lot was Maitri. Maitri always appealed to me a lot. इनफैक्ट जब भी मैं गोयंका जी की मंगल मैत्री की पोएम सुनता था, मेरी आंखें नम हो जाती थी. लेकिन मैत्री प्रैक्टिस कैसे करनी है, मुझे क्लियर नहीं था. गोयंका जी कहते थे कि सुखद संवेदनाओं के आधार पर मैत्री जगाएं, लेकिन मुझे तो कभी सुखद संवेदना हुई ही नहीं. सो आई वाज नॉट क्लियर व्हाट टू डू. सर ने भी हमें समझाया था कि मैत्री देना इज अ रॉन्ग टर्म. व्हाइल इट वाज अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट, बट समहाउ आई वाज नॉट एबल टू ग्रास्प इट. फिर मुझे लगने लगा कि शायद मैत्री मेरे लिए है ही नहीं. मैं तो खुद ही इतना परेशान रहता हूं, मैं क्या किसी को मैत्री दूंगा. लेकिन जब मैंने अपने आप को जांचा, तो मैंने पाया कि मैं बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गया हूं, बहुत संकीर्ण मन का हो गया हूं. फिर मुझे लगने लगा कि चूंकि मैं परेशान रहता हूं, दैट इज ऑल द मोर रीजन फॉर मी टू प्रैक्टिस मेत्ता. और अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे प्रैक्टिस करनी है, तो लेट मी जस्ट कीप इट सिंपल. लेट मी जस्ट वर्बलाइज इट. So nowadays, during the course of the day and when going to sleep, I make it a point to take out a moment and remember someone जिसके लिए I naturally feel good. And then I send good wishes to him or her. And while doing so, I smile. जिन लोगों को मुझे मैत्री देने में तकलीफ होती है, I keep them aside for the time being. And कई बारी I smile just like that also. अब मुझे नहीं पता कि मैत्री कैसे काम करती है and whether my good wishes make any difference to that person or not. But they definitely work for me. And my mood gets uplifted immediately. I have now decided that the practices I have described today will be my main meditation practice for the years to come. As you would notice, it is a very basic meditation. इसमें ना अनात्म बोध की बात हो रही है, ना आनापान के 16 steps की. But frankly speaking, some of those concepts are beyond my abilities right now. But I think that if Ajahn could overcome his anxiety by this practice over 3 years, I am also very confident कि अगर मैं लगा रहूं, तो मैं भी अपनी anxiety में एक dent तो लगा ही दूं. One last thing. जब अजान 2019 में इंडिया आए थे, तो मैंने सर से रिक्वेस्ट किया था कि वो मेरी कंडीशन डिस्क्राइब करके अजान से एक पर्सनल अपॉइंटमेंट मांग दे. बट अजान डिक्लाइंड अ पर्सनल अपॉइंटमेंट, सेइंग दैट आई शुड आस्क माय क्वेश्चन पब्लिकली. फिर मैंने सोचा कि मे बी अजान इज ट्राइंग टू टेल मी समथिंग. मे बी ही इज आस्किंग मी टू बी मोर ओपन अबाउट माय स्ट्रगल्स विद एंजाइटी एंड डिप्रेशन. एंड दैट इज व्हाई आई डिसाइडेड टू स्पीक टुडे. Similarly, I had an ex-business partner जिसके साथ I had a very acrimonious fallout about 15 years back. He had become quite successful, and frankly, I was embarrassed to meet him. But after avoiding him all these years, I met him last month and shared my story with him. Next month, I'll meet up with my school friend, जिसको भी मैं कई सालों से avoid कर रहा था. With that, I would like to yield my time. Once again, I would like to thank Geeta ji for inviting me, and to all of you for listening to me. If you have any suggestions for me, then please let me know. I will try my best to follow them. Thank you so much. थैंक यू अपूर्व जी, इट वाज वेरी नाइस. सजेशंस तो हमें आपसे मिला है. एंड उन्होंने एकदम ही सिंपल वे में बता दिया है कि वो कैसे साधना करते हैं एंड हाउ ही इज वर्किंग विद दिस फियर एंजाइटी. सो वी आल्सो हैव लॉट ऑफ फियर विद समथिंग और द अदर. तो हम भी अभी रिफ्लेक्ट करेंगे एंड वी विल रिज्यूम एट आई थिंक अराउंड 8 o'clock, राइट निखिल जी? Around 8 o'clock, we'll resume at 8 o'clock for any Yes. questions or sharing the reflections जो हमें क्या सीख मिली है अपूर्व जी से. थैंक यू.
ज्ञान का समय समाप्त हुआ. If anybody has any questions or if you want to share something, you may do so. Yeah, Payal. Yeah, firstly, I wanted to thank Apoorv for sharing. उसका मेहता वाला तो मैं कॉपी पेस्ट ही करने वाली हूँ. वो मेरे लिए भी इतना वो नहीं होता, तो that तो I'm going to follow. But I wanted to share my takeaway from his sharing. एक तो अपूर्व ने बोला कि उसकी सेंसेशंस जैसे जो लाइट हैं कंपेयर टू व्हाट ही फील्स, तो it was a lesson for me, क्योंकि right now my sensations, physical sensations over a period of time have gotten a little milder, and also because my focus is more on investigations, so sensations have taken kind of a back seat. And your sharing was kind of a red alert for me. Ki sensations are important too. In fact, everything in बुद्धवाणी is important. तो कोई भी अपने मन से कोई step जैसे वो उसको jump कर लेना is not a good idea. So in fact ये warning signal है मेरे लिए, sirens are on. If I'm missing out on something else also, I need to check on that. That is one thing. And you spoke about making a dent in anxiety. I think you've already made a very deep gash into it. This is what I feel. And एक मुझे बस एक चीज बोलनी थी जो हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था, which was you spoke about making life choices, regret about making some life choices. मैंने जितनी भी ये मैंने बनते महापन्यों से एक दफा उन्होंने किसी और कॉन्टेक्स्ट में बोला था, बट मैंने अपने चॉइसेस पे लगा लिया उसे. और इन फैक्ट व्हेन आई डोंट लाइक समथिंग एंड आई एम स्टैंडिंग ओवर देयर, मैं उसे हर जगह उस बात को अप्लाई कर देती हूँ. ही हैड सेड समथिंग दैट where I am right now is exactly where I should be. माने ऐसा मैं सोचती हूँ कि मैंने कोई डिसीजन अलग लिया होता तो क्या पता मैं कहीं और होती, बट दिस इज एग्जैक्टली वेयर आई एम सपोज टू बी. तो मुझे ऐसे आई मीन जब मैं थिंग्स विच हैव गॉन रॉन्ग के बारे में सोचती हूँ, सो दिस गिव्स मी अ लॉट ऑफ strength. I don't know what is the right word, but it helps me deal with those things. कि और मुझे ये भी लगता है कि अगर मैंने वो डिसीजन नहीं लिया होता, तो जैसे अगर मैं बीमार नहीं पड़ी होती अर्ली ऑन इन लाइफ, तो मैं विपश्यना कभी भी नहीं की होती. तो उसका एक बेनिफिट तो है, जो मुझे वैसे बुरा लगता था उसका एक बेनिफिट तो निकला. सो देयर इज अ रीजन व्हाई थिंग्स हैपन. And basically I believe life will teach you a lesson that it decides that you need to be taught. तुम जल्दी सीख लो तो अच्छा है, नहीं तो वो it'll keep getting tougher. And सिखा के तो वो चैन लेगी, बिना उसके तो तुम्हें छोड़ेगी भी नहीं भगा भगा के. बट इट इज, अगर तुम जल्दी सीख लो तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो यू मेकिंग इट टफर फॉर योरसेल्फ. दैट इज इट. थैंक यू पायल. और किसी को कोई सवाल है, पूछना है? think while I was reflecting, मुझे एक दो चीज तो बहुत ही सामने, like it's a like Apoorv came out and spoke in length very frankly, plus having a gratitude which was very good. Like I mean, compared to like बीच में थोड़ा सा शांत हो गए थे. He was like I feel like he's a very silent observer, and like with very few words he has put it across the message and how he is practicing, which also gives a lot of strength for all of us, those who have this fear of like not wanting to come and speak or share. It's basically it's helping everyone
to reflect and gives an opportunity to see it from different ways to observe. So still, if people, those who are still yet to come forward and speak, you still have time, and please do it. That's my request. And और किसी को कोई पूछना है, कुछ सवाल शेयर करना है, please do come forward. I think, Apoorv, first of all, you know, a lot of compliments, a lot of anumodana actually. आपने एक तो जिस तरह से सारा बताया, I think for me what's most inspiring is here is a person जिसने वास्तव में, जो ये अजन अमरो वाला एग्जाम्पल है, ये पता नहीं कई बार हम कब से बातें कर रहे हैं इसकी, है ना. आई थिंक धर साहब कीप्स रिपीटिंग इट एवरी फ्यू मंथ्स, दिस कम्स अप. बट दिस इज परहैप्स द फर्स्ट टाइम कि किसी ने वास्तव में ऐसा लगता है कि उसको उतारने की कोशिश की है, उतारा है. सो रियली आई रियली सेलिब्रेट दिस, एंड आई थिंक आई हैव ग्रेटिट्यूड कि भाई अच्छा, अपूर्व उसको कर रहे हैं. सो इट्स आल्सो इंस्पायरिंग for many of us that yeah, we should and can, and we should really do it. So really, to me, that was like I said, basically super inspiring. So thank you for that. And I think thank you also for actually preparing. I can see कि अगर ये सब आपने यहाँ हमारे साथ इतने अच्छी तरीके से शेयर किया है, you'd have put in some effort and work into preparing for it. So to me, that's also something to learn for all of us. So thank you for both of those things, and may your journey continue in this way, and may you be in this way an example for the rest of us also to be inspired and learn from. So very nice. Thank you. Thank you. Thank you. I believe Payal has raised her hand. Sorry, Gitaji, you're yeah, Payal, you still Yeah, want yeah, to yeah. ask? Yeah, please. Yeah, one thing I forgot, that I've known Apoorv for some time now, but I had no idea what he was going through. तो ये ना एक मेरे लिए बहुत बड़ा वो था कि to throw all judgments into the dustbin. Each one of us is fighting their own battles. कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता है, but किसी को कोई judgment, किसी को judge करने का कोई वो नहीं बनता है, because you don't know the other person's story. So this was a big lesson for me. So thank you, Apoorv, again for that. Thank you. Thank you. Anybody else? Anyone? Sir, आप कुछ कहना चाहोगे? Yeah, I had written it on the chat. I don't know whether he saw. I really felt very happy, Apu, to hear you, and wish you all the best and complete success in your hard endeavors. I'm sure it will be. I can see that you've picked up the gauntlet and you'll carry it on. So our best wishes from all of us. Thank you, sir. Thank you, sir. If there are no questions, I would just like to make a small announcement before I hand over the session to Nikhil ji. किसी को कुछ पूछना है अभी और want to share something? Okay, नहीं है तो tomorrow dear auntie, her auntie will share her insights. So please join the session. And over to you, Nikhil ji. थैंक यू गीता जी. तो अभी इस सेशन में बंटी जी ने मुझे बताया था कि वो डिस्कस करना चाहते हैं कि आनापान सती के उपरांत जो हमारी श्रृंखला चल रही है उसके उपरांत हम क्या प्रैक्टिस करें. तो इस प्रोसेस को वो डेमोक्रेटाइज करना चाहते थे और सबसे पूछना चाह रहे थे. सो ओवर टू यू बंटी जी. ओके निखिल, थैंक यू. तो जैसे आप लोग सब जानते ही हैं, पिछले करीब 2.5-3 सालों से इस तरह से ये जूम पे हम लोग करते आ रहे हैं. एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम वी हैव हैड typically we've had recordings of previous resource material that we have. Typically that's what we have played. और वास के दौरान
धर साहब कुछ लाइव भी हमें इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस, टीचिंग्स अवेलेबल कराते हैं. सो यूजुअली हम क्या रिसोर्स मटेरियल यूज़ करें, वो इट इज़ मोस्टली सेरेंडिपिशियस, या किसी एक व्यक्ति को कुछ आता है तो वी यूजुअली गो बाय दैट. सो आई थॉट मे बी इट्स अ बेटर, इट मे बी मोर फ्रूटफुल अगर आज शाम के सत्र में थोड़ा राय ले ली जाए, ओपिनियन ले ली जाए कि अगर लोगों के कुछ ओपिनियंस हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे वुड लाइक to next have either played from the resources that we have or taught afresh, then please go ahead and speak. And so typically what we do is we do a break now. We'll give a week where there won't be much stimulation in these sessions, and then we can pick it up again. So please go ahead with suggestions on what you'd like to next take up. I think एक तो निखिल already had expressed a view कि वास 21 के जो end के sessions थे बोधिपक्य धम्म में, so that was one thing. So that of course we've got. But Surenji, please go ahead, or anyone else. Surenji's got his hand up. Payal, you can. Is your hand still up from the previous thing, or is it fresh? Fresh. Okay. So maybe let's hear Surenji first, and then we'll come to you. Thank you, Bhanteji. First of all, I must apologize. I missed the early part of Apoorv's presentation. So I'll watch it again because obviously he's done a great job. I'll compliment him once I have heard it completely myself. Secondly, regarding the suggestions, I think some time ago, Mr. Dhar had talked about parmis, and we came across a book by Ajahn Suchito on parmis. So that's this is a suggestion that could also be considered, that we could perhaps go through that book collectively. Just a thought. Okay, very good. Thanks, Surenji. Okay, Payal. फोर नोबल ट्रूथ, कुछ दर्शन ने कुछ 3-4 दिन का या फ्यू डेज का सेशन किया था, उसका लिंक है, वो वाला was one. And second, I think which I would really like to do is Paticca Samyupad. मैंने वो अभी किया भी है, बट वो जितनी भी बारी कर लो अच्छा ही लगता है, तो it's a good practice. So Okay. Any other ideas? Any other thoughts? जो न्यू कमर होते हैं, और बहुत सारे मैंने देखे जो 10-10, 15-15 विपश्यना के सीवर ले चुके हैं, तो वो भी अभी भी मतलब मेंटल डिस्टॉर्शन से वो पीड़ित रहते ही हैं. तो मेंटल डिस्टॉर्शन पर भी थोड़ी बात कर ली जाए. क्या डॉक्टर साहब कुछ आप बताएंगे, क्या आपका मेंटल डिस्टॉर्शन से क्या वो है? होती है ना, डिस्ट्रैक्शंस होती हैं जब हम जो न्यू कमर आता है, जब वो बैठता है अपना आंख बंद करके, तो उसको जी. अंदर वो चलने लगते हैं. तो ये कहते हैं कि ये इसको सांस पे फोकस कर लो, तो वो उससे बहुतों के शांत हो जाते हैं, लेकिन बहुतों के शांत नहीं होते हैं. और ज्यादातर के जी. देखा मतलब कई कई बहुत सारे कैंप ले चुके हैं, वो सीवर में जा चुके हैं 10-10 के, लेकिन फिर भी है. जी. जी. सो एक जो मुझे ख्याल आ रहा है, ये अलग अलग चीजें सुन के, और हाँ सूरी साहब, प्लीज प्लीज गो अहेड. बनते जी, इन जनरल जो मैंने लोगों से सुना है और मेरा खुद भी एक्सपीरियंस रहा है कि मित्ता प्रैक्टिस इज वेरी अपलिफ्टिंग. वी रियली फील अपलिफ्टेड. तो मित्ता के ऊपर जो हमारे प्रीवियस डिस्कशंस हैं उनके सेशंस को रिप्ले किया जाए. दूसरा एक जो मैंने भी फील किया है कि कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ. डॉक्टर साहब ने एक बड़ा अच्छा सेशन लिया था
और क्योंकि हम लोगों में यह है कि वी लूज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, तो मेरे ख्याल से दोनों ही एस्पेक्ट्स हैं हमारे आने वाले टाइम में अगर रिपीट किए जाएं फ्रॉम द इवन फ्रॉम द ओल्ड रिकॉर्डिंग्स, दैट वुड बी अ गुड आइडिया. Okay, very good, Suri Saab. Thank you. Yeah, that's very, very helpful. So, एक जो मुझे ख्याल आता है वो ये है कि इनमें से कई चीज़ें ऐसी हैं ना जो, या जैसे इवन जो ये हमने अ, अभी आनापानसति सुत्त के जो रिकॉर्डिंग सुने, a lot of these teachings already assume familiarity with basic concepts जो भगवान बुद्ध की टीचिंग्स में आते हैं. तो सो फॉर इंस्टेंस अगर हमें पारमीज की बात करनी है, सो देन इट अज्यूम्स दैट वी हैव सम फेमिलियरिटी. सिमिलरली जो फोर नोबल ट्रूथ्स वर्कशॉप थी जो 3 दिन में हमने की थी, इट अगेन प्रिज्यूम्स के जो खंड के कॉन्सेप्ट्स हैं वो काफ़ी क्लियर हैं एंड सो फोर्थ. So one thought I had was that maybe, and of course, from time to time, various people have, raised the issue of, have requested, inputs on basic concepts. One thought I had was, हमारे पास 2019 से बड़ा वैल्यूबल रिसोर्स मटेरियल अवेलेबल है जो 19 सत्रों में था. इन 19 सेशंस वी हैड दोज लाइव क्लासेस इन धम्माराम, 2 hours each. One thought I had was maybe why don't we do that once more. और उसमें फॉर एग्जांपल डिपेंडेंट ओरिजिनेशन तो खैर उसमें आ ही जाएगा. फोर नोबल ट्रूथ्स के कंसेप्चुअली वो उसमें आ जाएगा. जो जिस वर्कशॉप की पायल जिक्र कही हो उसमें हम लोगों ने एक्चुअली उसको अपने अपने केस में प्रैक्टिस किया था. A lot of the aspects of Bodhipakya Dhammas will get covered there. So one thought I had was why not maybe do that first, and then one can get into more sort of detailed aspects. So in those 19 sessions, each of which is 2 hours, Dhar Sahab had basically covered more or less the entirety of basic concepts, both in terms of teaching, and then he would give small exercises that we would do. तो हम सोच सकते हैं कि वो exercises हम कैसे करेंगे in this format, which is remote and so forth. But that was one thought I had that was going through my mind, and also now hearing some of these suggestions. So what would be people's views on that? I think it's a very good idea. हम एक सेशन को पूरा वीक कर सकते हैं और डिस्कस भी कर सकते हैं और फॉलो भी उसका जो प्रैक्टिस एंड ऑफ द सेशन में जो प्रैक्टिस था वो प्रैक्टिस भी करते रहें एंड पूरा उसमें डिस्कस करें वीक, इंस्टेड ऑफ जस्ट ऊपर ऊपर से निकल जाना. उसको डीपली पूरे उसको, क्योंकि जो धर सर की क्लासेस थी वो हमने बाद में दोबारा डिस्कस की सबने ग्रुप्स बना के, और वो 3 to 4 times करा. उसके बाद भी देयर वाज ऑलवेज समथिंग दैट यू कुड लर्न फ्रॉम इट. तो इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग ओवर इट इन अ डे और 2, अगर उसको पूरा हफ्ता लगा के करेंगे तो उसकी डिटेलिंग और उसका जो एक्चुअल वो है वो अच्छे से आएगा. तो दैट इज व्हाट आई फील. Yeah, that was actually my experience as well. I've kind of gone through that about 3 or 4 times now, and each time there's something new. But sorry, before that, Geeta, please go ahead. Sorry. I was just thinking all these sessions like Vasa sessions from 19 or 20, from 20, it's been like, we have done it and we have heard it also. It's just a very vague thought. Like I was thinking, like, why not have a proper session
which we've been having it, kind of a retreat or a weekly one Sunday, even if we have to club the 17 videos or 19 videos of Buddha's teaching. Like Payal was saying, we need to have that 1 week to practice it, basically. And maybe on a Sunday, as a workshop to discuss and as a homework, where we can have time to finish that homework and come back on a Sunday if everybody agrees, depending on the time. And, I'm not sure about it. It's just a thought which just came. Like, so नहीं to मैं have earlier Sunday sessions. Sorry, Payal, I think I interrupted. नहीं Only on Anapan, every fortnight, on fortnight basis, we used to have this in 2020, if I recall. Maybe others can contribute. It's just a thought which just occurred to me. नहीं आई डिडंट मीन कि हफ्ते में एक दफा डिस्कस करो, मेरा था कि पूरे हफ्ते करो, पूरा हफ्ता उसके ऊपर लगाओ, 1 क्लास पे 7 डेज लगाओ, इज व्हाट आई Yeah, इन 1 केस class पे 7 days लगाओ, practice में वीकली नहीं, वंस डिस्कशन डिस्कस में भी, करो. डिस्कशन में भी मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि उसको डिस्कस भी करो और उसको उसका प्रैक्टिस भी करो, दोनों दोनों का था। वो तो तुम सब लोग 2 घंटे की क्लास है, ऑनलाइन है, वो सब लोग अपने आप देख लो, ये नहीं कि उसको इसमें प्ले कर रहे हैं, उसको अपने आप देख लो और फिर 1 वीक लगा के अच्छे से उसको डिस्कस करो, डेप्थ में डिस्कस करना। मेरा ये था क्योंकि हमने जितनी बारी भी किया है उसमें हर बारी कुछ सीखने को ही मिला है कि कुछ या भूल गए हो या कुछ रह गया पिछली बारी या कुछ समझ में नहीं आया था, कुछ क्लैरिटी, इसलिए हम जस्ट सेइंग उसको पूरा हफ्ता लगा के इन डेप्थ करो ताकि आगे जाके किसी के लिए भी कोई प्रॉब्लम ना हो, वो जो खंड है या 4 नोबल ट्रूथ्स है वो एकदम एब्सोल्युटली क्लियर हो जाए उसके बाद, जो ग्रुप है उसके लिए। ओके, मैं तो ऐसा सोच रही थी जैसे कि ऑनलाइन रिट्रीट काइंड ऑफ अ थिंग, लाइक डू प्रॉपर आनापान फॉर 3-4 days and then get into insight meditation. I was thinking on those lines, if that can be another way of looking at it, because we have never actually explored that kind of a part. That will also help, but again, it will be online. People should have time to attend, like how we attend Ajahn Amaru's retreat for 3-4 days. वैसे मैं I was thinking on those lines. That will become more helpful, is what I felt. घर रह के वो डेप्थ आता नहीं है यार रिट्रीट का, जो बिकॉज यू आर डूइंग अदर थिंग्स आल्सो, जो जाके रिट्रीट करने का रिजल्ट आता है ना, वो ऑनलाइन में कोई है कभी नहीं है, वो पता नहीं चलता तुम्हें, तो हर एक के रिजल्ट वो हो जाते हैं। ठीक है। मैंने Okay. हम Sorry, सॉरी go on. No, please go on. नहीं आई वाज जस्ट सेइंग कि हम रिजल्ट तो जो ऑनलाइन जो रिट्रीट होती है उसका चाहते हैं, बट हम करते हैं ऑनलाइन फॉर्मेट में अपनी कन्वीनियंस पे, तो वो ऑब्वियसली रिजल्ट्स नहीं आते, तो इसके लिए ऑनलाइन में थोड़ा सा वो हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है बहुत सारा। Yeah, I mean here really, Sharma sab, I'll just come to you, huh? Sure, But sure. maybe isko thoda we'll just maybe clarify this. इसमें तो कम से कम मेरा आइडिया ये था कि हम सभी लोग एक कॉमन मिनिमम अंडरस्टैंडिंग पे आ जाएं, एटलीस्ट कंसेप्चुअली। और इस बात से वो उठ के आया कि जब हम ये सेशन सुन रहे हैं, कई बार जो जिस तरह के क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं, इट डज अपीयर दैट विद रिस्पेक्ट टू द द टीचिंग्स, हम लोग अलग अलग हमारी समझ है टीचिंग्स के बारे में, कॉन्सेप्ट्स के बारे में। सो दैट वाज रियली द आइडिया। I mean, I don't know, and I'm not experienced enough. I don't know कि इस फॉर्मेट में हम लोग जिस तरह के हमें आउटकम्स एक फिजिकल सेक्लूडेड रिट्रीट से मिलते हैं, if we can really do that. I'm not so sure about that. Maybe we can invite sort of Mr. Dhar's opinion on that. But so the way I was proposing it was actually much more limited, was more conceptual clarity. Maybe we listen to Sharma ji first.
सर सर मेरी थिंकिंग ये थी कि हम लोगों को किसी तरह से जो आपके अलग अलग प्रोफेशन रहे हैं वो कंपाइल होकर के टॉपिक वाइज मिल जाए कि ये आनापान का बंडल है, ये आपका मेत्ता का बंडल है, ये आपका खंडों का बंडल है। इस तरह के बंडल मिल जाए और डिस्कशन करने से पहले हमें से हर प्रत्येक जो है पार्टनर उस बंडल को अपना अपना स्टडी करे घर पर, और उसके बाद में जो क्वेश्चन उसको अराइज होते हों उन क्वेश्चन को वो क्लियर कर सकता है। अदरवाइज क्या होता है कि हम क्वेश्चंस हम लोग पूछते हैं और वो क्वेश्चन की डेप्थ हमारी अंदर से नहीं आती। तो पहला ये है, जैसे कि मेटा पर बात चल रही है, तो मेटा पर जितने आपके लेक्चर्स हैं वो एक जगह कलेक्ट हो जाए, इसी तरह से आनापान के लेक्चर एक जगह मिल जाएं और वो हम सब लोग किसी तरह से उस बंडल को शेयर कर लें। और दूसरी बात ये थी कि जो हम लोग सोचते हैं कि मिलना जरूरी होता है, तो सही बात है, क्योंकि अभी ऐसा मालूम होता है कि हम लोगों के पास कोई निश्चित जगह नहीं है या खाने पीने का इंतजाम नहीं है, तो हम लोग किसी पर्टिकुलर जगह पर, अलग अलग जगह पर अपने पॉट पॉट लंच टाइप जो है घर से अपना खाना बनवा कर लाएं और वहां पर मीटिंग करें अपनी, और मीटिंग में जो इसको जो करना है अपना जो क्लेरिफिकेशन है वो अपना क्लेरिफिकेशन कहता रहे वहां। उसमें महापन्नू जी प्रेजेंट रहे, आप भी संभव हो तो रह सकते हैं, और वहां उसमें क्लेरिफिकेशन हम लोगों का होता रहे। क्योंकि अभी तक जो है एक कलेक्शन एक जगह होना वो मेरे ख्याल से बहुत आवश्यक है। और डिस्कशन, पर्सनल डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं कहीं पॉट लंच के द्वारा या कहीं मीटिंग के द्वारा, मीटिंग प्लेस पर, तो उससे अधिक फायदा होगा बेसिकली। और फायदा तो वैसे वैसे भी फायदा तो होता ही है। थैंक यू। अच्छा, तो आप फिजिकल मीटिंग की बात कर रहे हैं शर्मा साहब? हाँ, इज दैट करेक्ट? मैं नहीं, मैं सर ये फिजिकल मीटिंग की बात इसलिए कर रहा था जो उसने पायल ने जिक्र किया था कि एक दिन के लिए मीटिंग या 2 घंटे के लिए मीटिंग। अभी कोई हम लोग के पास खास जगह तो है नहीं, तो ना खाने का इंतजाम रेगुलर हो पाएगा जैसे बाकी रिट्रीट में होता है। तो अपने घर से खाना बना कर ले जाए, मिले वहां पर, कुछ देर बातचीत करें, जिसको सुविधा हो वो आ जाए, सुविधा नहीं हो अपने नहीं आए। लेकिन उससे पहले एक कलेक्शन जो है कि भाई धर साहब का ये आना पान का बंडल है पूरा का पूरा लेक्चर्स का, या धर साहब का ये मेत्ता का बंडल है पूरा का पूरा, वो हम लोगों के पास हो तो हम लोग अपनी सुविधा अनुसार जिस बंडल को चाहे उस बंडल को घर पर स्टडी करते रहे। हाँ, श्योर। जैसे सो मे बी मैं अभी रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि अभी जो हम डिस्कशन है ना, दैट इज क्वाइट लिमिटेड। कि ये जो ठीक हमारे है। सुबह शाम के सत्र चल रहे हैं जी उनमें जी हमें अब क्या और रिसोर्सेज यूज करने हैं, मेरा निवेदन है फिलहाल हम उस पे लिमिट रखें। वी कैन देन डिस्कस दीज अदर जी जी जी। प्रपोजल्स विच आर वेरी गुड in terms of physical meeting, but for the moment maybe उसको हम जरा सेटल कर लें and then we can broaden the conversation. श्योर और श्योर। शर्मा साहब, ये ऑलरेडी मोर और लेस हमने इस तरह की क्लासिफिकेशंस कर रखी हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, ये मैंने अभी डाला है ना। तो ज़्यादातर जो चीज़ें टॉपिक वाइज है ना, वो ऑलरेडी ऑलरेडी इनके वीडियोस ऑलरेडी क्लासिफाइड हैं मोर और लेस। तो मेरे को चाहिए बेसिकली जी बात। जी, मैंने अभी यहाँ पे डाला है, आप देखें अपने इसमें चैट वाले में। ओके। So a lot of things, most things are actually available. They have already been classified. कुछ अभी बच थैंक्स रहा है, but ज़्यादातर चीज़ें already classified हैं. थैंक्स। So maybe just coming back to how best do we use these sessions, and um, so Dhar साहब, did you? हाँ, सूरी साहब, हाँ प्लीज। ये शायद मुझे कोई समझने में गलती लग रही है कि एक तो एस्पेक्ट है कि हमारे ऑलरेडी जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको यूज करें और कोई नया इनपुट ना आए इस ग्रुप में। तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि हम लोगों ने जो ऑलरेडी इतना कुछ सीख लिया है, सीखने की हमने कोशिश की है, अभी उसमें से बहुत थोड़ा ही डाइजेस्ट हुआ है। एसिमिलेशन इज वेरी पुअर, एटलीस्ट इन माय केस आई फील कि व्हाटएवर हैज बीन told and explained and discussed with us, assimilation has been very poor, the digestion has been very poor. तो अभी नया एक्सपोजर अगर देना है, कोई जरूरी है, तो उसको एक लिमिटेड टाइम ही दें, हम पुराने को ही हम रिपीट करें। दैट्स माय सजेशन। जी जी, थैंक्स। यस यस, राइट। हाँ जी, प्लीज गो अहेड गीता।
Okay, if it is in the morning and evening sessions, then like what SVG said, I'm not talking about book reading as such. Maybe book reading is also good. I think we should discuss on parmis because that session we have never done it as such, other than panel discussion. Even I don't remember. Many people must have missed on the panel discussion also. So that can be a newer thing. So then it gives a holistic that you're covering that part which was never discussed in depth is what I feel. Okay. Okay. Got it. Okay. Anything else? Anyone else? आई स्टिल फील कि एक दफा वो टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा कर लें ताकि सबके लिए बेसिक्स एक दफा सबके लिए फंडामेंटली सबके लिए क्लियर हो जाए, फिर पारमी आगे फिर एक एक स्टेप आगे बढ़ाएं, बट पहले सब एक ही उस पे आ जाएं फिर आगे बढ़ें तो ज्यादा बेटर होगा. Okay, we are almost we're actually done with time. So, Dharsab, just as the main resource person, where do you want to? What's your sense of this? जैसा बंते जी ने कहा, and the way I have understood, because we have been often discussing about the outcomes of various things which we do here. तो कई बार बंते जी को भी लगा, मुझे भी लगा कि शायद कुछ चीज़ें, कुछ क्वेश्चंस से ऐसा लगता है कि there is a need for clarity on various concepts. Conceptually, even simple things like the terms used in Buddha's discourses. What is khanda? What is really is Vedana? What is the meaning of body sensation and what is Vedana? Then what are the 12 links of Paticca Samutpana? Just their meaning. Leave aside linkage. Meaning. What does avidya mean? What does sankhara mean? What does vijnana mean? And so on. So once we have a complete clarity on that, it does away with lot of questions. Because हमको हमेशा doubt रहता है कि यार ये कुछ और है शायद. And it is also because when we read many books, there are some differences in the books and especially in the English written book. Most of us read only English written books. तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है उसमें concepts में. What is metta? What is metta really loving kindness or something else? How does upekha work in? How do these four Brahma Viharas work together? Why is upekha a Brahma Vihara? These are basic things. So what we have done in that, what Bhanteji is suggesting is that we ask those questions. And as a basic resource material, he has suggested that what we did in live sessions in Dhammarama over a long period of time, many months, that could be used as a basic resource, and then we can build upon that. Obviously, that won't be sufficient, but we can build upon it once we get the questions, because that also was built upon the basis of questions which people asked. So one lecture went, and then people are asked questions, then the next lecture was evolved accordingly. So I also agree with Bhanteji that before we, for example, parmis, what does it really mean? Isn't it? And where does it stand with respect to the Nikayas? Is it really part of Nikaya or not? And what does it really mean to have a parmi? How much importance should it be given in our practice? They're very important questions. And I feel that once we have that basics clear, it's very helpful. Then the rest of the teaching we can easily assimilate. We don't have any doubts कि क्या हो रहा है. कभी एक धम्म शब्द का कभी कुछ मतलब बता देते हैं, कभी कुछ मतलब बता देते हैं. क्या एक मतलब नहीं हो सकता, या बहुत सारे मतलब होने ही हैं, और किस कंडीशन में क्या मतलब है, वो अगर हमें क्लियर हो जाए तो फिर हमारे डाउट्स काफ़ी कम हो जाते हैं. और धम्म में प्रोग्रेस करने के लिए, प्रैक्टिस में प्रोग्रेस करने के लिए डाउट नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट अबाउट द बेसिक्स. जो बेसिक टर्मिनोलॉजी भगवान यूज कर रहे हैं
उसके बारे में डाउट नहीं होना चाहिए। 4 नोबल ट्रूथ्स की फंडामेंटल क्या है, फर्स्ट नोबल ट्रूथ है क्या? What Apoorv today described essentially understanding first noble truth. That's what I have said so many times. So it will be very helpful and increase the if I may use that word, productivity of our subsequent sessions, if we are really clear about the concepts to as much extent as possible. So I would tend to agree with Bhante जी कि अगर वो करे तो शायद अच्छा ही रहेगा, ऐसा मुझे लगता है. And then in terms of the format, etc. That can be decided, I think. फॉर्मेट तो जैसे Okay. पायल कह रही है, आइडियल तो वही है, बट वो आइडियल होता नहीं है, हो नहीं पाता है ना. वी एक्सपेक्ट एवरीबडी टू हैव रेड द gone through that, and it may or may not have, we may not have got the time to do it. So it may be that one session we play that half of it, discuss it, then play another half, then discuss it, or whatever, depending on the format. Whatever आप decide कर रहे हैं, maybe you can talk to Nikhil, Poonam, Payal, and few people and decide upon the format. That आप जैसा कहेंगे वैसा कर लेते हैं. क्योंकि एक बार बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाते हैं. I mean, we are open, and this is not much my opinion. You don't need to agree to it. If there's a felt need कि नहीं, we generally are quite clear about the concept, then we can go ahead, of course, and we can go further. निखिल, अभी अपने पास कितने बचे हैं? 3 या 4 बचे हैं ना इस 31 आनापान वाले के? three sessions. So we have maybe another 3-4 days to, decide this, and then another week after that, or 10 days. We can give a break for week or two and then start. It's good to give a break also, ताकि we practice on our own and then know what exactly, for example, what exactly is our takeaway from these Anapana sessions. So we'll know once we stop and then practice for 1 week, 10 days, or whatever. जैसा आप decide करें, सब लोग मिलके जो भी decide करें. Okay, Payal, maybe something quick. I just wanted to say, अगर ऐसा है कि लोग घर पे नहीं देख सकते, तो हम सैटरडे संडे 2 दिन इंस्टेड ऑफ हाफ 2 घंटे की है ना वो क्लासेस, तो 2 दिन हम 1-1 घंटा क्लास प्ले कर दें, और फिर 5 दिन एटलीस्ट उसको फॉलो भी करें और डिस्कस करें. अगर ऐसा है, क्योंकि वो 4 पार्ट में तोड़ देंगे तो फिर डिस्कशन भी थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा, तो 2 दिन सिंपल सिर्फ क्लास प्ले कर लें और फिर वैसे करते हैं. वैसे तो 2 वीक का अगर गैप देंगे तब लोग अपना अपना देख भी सकते हैं. 17 क्लासेस हैं, देख सकते हैं. अगर नहीं हो तो मैं बोल रही हूँ 1-2 दिन प्ले कर दें और बाकी फिर डिस्कस कर लें. Okay, what I suggest is maybe we'll do a small separate meeting, and we can discuss the format in greater detail there, including how do we address those exercises and so forth. So maybe इसको हम अभी close नहीं करते हैं, and either myself या Nikhil, one of us will initiate some communication, or फिर let's come back together in a smaller group and think about this further, including topics, but also then formats. Let's do it that way. Okay, is that good enough? So we're not closing it just now, but very valuable. I've taken some notes, and we'll come back to this. And और फिर इस larger group को हम we can report back. Okay, हमें क्या लगा, what's the way for? Okay. Yeah. Any last words? Okay, Bhante, we can request for closure. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantam Abhivadin Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Supatipanno Bhagavato Sāvaka Sangho Sangham Namam.
With respects to Bhante ji, Pratham Pranam, Dutiyampi, Tatiyampi. Thank you very much. Thank you. Thank you, Geeta, for making everybody speak. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Tomorrow evening, I'm just reminding one more time, Auntie will share her insights. So please join the session. Thank you, everyone. Good night. Thank you, Apoorv. Thank you so much.